हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक द नाबार्ड एग्जामिनेशन. एज वी नो, द नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी केम आउट and the duration to fill the form from the 17th of July till 7th of August 2021. So from the concern, today we are talking about what are the strategy by which we are able to crack the NABARD examination. तो चलिए दोस्तों, मैं हूं रामेश्वर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात करेंगे ऑल द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट रेफरेंस मटेरियल फॉर द सेम. सो बी विथ मी टिल द लास्ट टू नो ऑल द कंसर्न. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट आर द वेज बाय विच वी आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ नाबार्ड. जी, आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक द नाबार्ड एग्जामिनेशन बिकॉज द नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी केम आउट. इन टुडे सेशन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट followed by qualifying exam strategy, and then we talk about the mains examination, and followed by that what are the different types of reference material that by which we are able to crack द एग्जामिनेशन ऑफ नाबार्ड. ठीक है, सो सबसे पहले बात करिए. देखिए यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए RDBS there are nearly 11 number of discipline including agriculture, and in which the overall positions are 148. How many positions are there? 148 positions are there according to NABARD. Fine. Now we talk about the tentative schedule. We know the tentative schedule to fill the form started from 17th July 2021 to the 7th August 2021. ये रहा हमारा tentative schedule, and tentative schedule for the examination. The examination schedule is nothing but from last week of August 2021 or it is either in the way of September 1st week 2021. Fine. And all the details related to the tentative schedule or the final schedule definitely displayed on the NABARD website. Okay. Now we talk about selection procedure. In terms of that, as you know, there are 8 different types of parameters for our pre-examination, and in which the qualifying section is the most important, started from section number 6 to section number 8. और एक कौन से है? जनरल अवेयरनेस सेक्शन नंबर 6, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज सेक्शन 7 एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्शन नंबर 8. सो हमें एग्जाम के लिए वी आर एबल टू नो जस्ट 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, यहाँ पे ध्यान में रखिए, देयर आर 200 मार्क्स and we have to solve the paper in 120 minutes, out of which 100 marks are there for section number 6, 7, 8. okay, so यहाँ पे 1 से 5 is only act as a qualifying examination. आपको just यहाँ पे qualify करना है, but the merit section is from the 6 to section number 8. so आपके जो marks गिने जाएंगे for the mains examination or for the further interview, these are from the 6 to 8. so that is more important. Fine. So here we are talking about just how to crack about all the things, in which 1 to 5 is for the qualifying examination, followed by 6 to 8 is the merit section. Okay, यहाँ पे ध्यान में रखिए. Now we talk about the pre-examination pattern. As we know, there are 5 important things, और हमारे जो पहले 5 पार्ट थे प्री में, वो थे qualifying examination. Reasoning, we are able to go reasoning by means of the RS Agrawal book. English, यहाँ पे देखिए, English is again the most important because it is the subject which is already there for the pre as well as for the mains examination. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? We are able to know what are the roots, what are the basic understanding of the word, precise comprehension view. So इसीलिए I suggest here Word Power Made Easy by Norman Lewis, one of the good book for English communication, or we could say the basics of English understanding. Followed by that, daily newspaper reading is again one of the way. Then computer, we could say any book of MSCIT definitely solve the purpose of computer. Followed by that, quantitative aptitude, again RS Agrawal is one of the good book for the same. And decision making, here you have to apply different tricks. By the way of that, we are able to solve the decisions, or we are able to solve the problems with the help of common understanding. Okay, so these are the 5 things. Apart from that, now we talk about the rest 3 merit terms, or the merit marks depend upon the rest 3 one, in which the first and the most important one is the general awareness. Here we could say daily newspaper reading is one of the way, like different types of magazines could be there in terms of your reading. कौन से? PD, प्रतियोगिता दर्पण, again सामान्य ज्ञान दर्पण. These are some of the ways. Apart from that, you must be aware about what is going on in the nearby things. ध्यान में रखिए, generally from the past 4 to 5 months जनरल अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. सो आपको फरवरी मार्च के आगे से चालू करना पड़ेगा, सो दैट इट कुड बी मेक अ प्रूवन वे. फाइन. यहाँ पे you have to taken care about different types of awards which are just recently done, like our Nobel Prize, some of the Oscar, or even Pulitzer Prize which are just nominated in this week itself. Okay, so ये आपको अच्छे से ध्यान में रहने चाहिए. Then
contribution made by the different types of sector in our GDP, that is ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें किस फायदेमंद साबित होगा? नथिंग बट आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। करंटली एग्रीकल्चर सेक्टर का 19.9% इज द कंट्रीब्यूशन मेड टू द जीडीपी फॉर द एग्रीकल्चर, सो इट इज नियरली 20%। ये 2004 के बाद आज के कंडीशन में 19 के ऊपर गया है, इट इज नियरली 15 to 16 तक ही था। सो वी आर एबल टू नो ऑल द कंसिक्वेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ समिट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, maybe the G7, G20, SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. Again, what is the head office? Kathmandu. So हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। OECD, Organization of Economic Cooperation and Development. अब इन सब में क्या कॉमन है? हमें एक 3 टायर सिस्टम इन सबको अपनानी है। फर्स्ट थिंग, एग्जैक्टली इस साल की समिट कहाँ हुई थी एंड व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ द समिट। सेकंड थिंग, द हेड ऑफिस, एंड थर्ड थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट समिट अबाउट, और नेक्स्ट समिट हमें कहाँ पे होगी। सो ये तीनों चीजें हमें अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए एनी टाइप ऑफ ग्लोबल समिट। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस का। नाउ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, we could say in an abbreviated term ESI, economic and social issues. In terms of that, we have to take care about the different types of magazines for the particular purpose, like योजना, कुरुक्षेत्र। ये दो मैगजीन आपका नियरली आपका मैक्सिमम पर्पज आपका यही सॉल्व कर देंगे, योजना एंड कुरुक्षेत्र। फॉलोड बाय दैट सम ऑफ द बुक्स लाइक सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा, it is for the economic and social issues, और even some of the different types of social movements, ये भी यहाँ पे आपको काम में आएगा। फाइन। देन थर्ड थिंग इज द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इट इज ARD। यहाँ पे देखिए अगेन योजना इज एक्ट एज अ प्रूवन वे। अपार्ट फ्रॉम दैट सम ऑफ द बुक्स लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय आचार्य, we could say marketing management in India, okay, so it is by the Acharya. This book is also helpful. हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे कि कौन सा रेफरेंस मटेरियल इसके लिए सबका फायदेमंद साबित होगा। फाइन। नाउ वी टॉक अबाउट ओके मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमें पता है इंग्लिश इज द पेपर वेयर 3 क्वेश्चंस आर देयर एंड मार्क्स आर 101, एंड इन पेपर सेकंड अगेन पेपर सेकंड इज ऑफ 2 वे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चंस है 30 मार्क्स के हिसाब से। देन फॉलोड बाय दैट डिस्क्रिप्टिव पेपर इन विच the marks allotted is 50 marks. Here 2 question for 15 marks, 15 marks के 2 question, 15 marks 10 marks के 2 question, so कुल मिला के आपके हो गए पूरे 50 marks. Okay, and time given is 90 minutes. Here you have to write the answer, या हम कह सकते हैं you have to type the answer. ठीक है, इसलिए आप इस बारे में भी अभी से ध्यान में रखिए। Fine. Now we talk about the exact syllabus, हमें क्या क्या है हमें पता है। For this the syllabus is just a indicative way, ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ पे मेजर इम्प्लीकेशंस कोई भी पूछ सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस सिलेबस इज ओनली एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पेपर फर्स्ट तो हमें पता है नथिंग बट आवर इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन व्यूज, योर अंडरस्टैंडिंग, दीज आर द थिंग्स। नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अभी यहाँ पे देखिए व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नथिंग बट, यहाँ पे देखिए सेंटेंस ध्यान में रखिए, द कॉलिंग रेशियो टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू वुड बी मैक्सिमम ऑफ 1:25. If suppose there are 10 seats, so 10 into 25, nothing but 250 people could be called for the men's, and the qualifying ratio for the interview is 1:3. 10 seats, then 30 seats could be reserved for the, would be applicable for the interview. Again, that could be reduced as per the NABARD regulations. Okay, so these are important from this way. Apart from that, keep in mind 1/4 is the negative for both men's one and our pre one. Fine. Now we talk about different things, or what are the important reference material for economic and social issues and our agriculture and rural development. ये दोनों चीजों के लिए हमें देखना है। सबसे अब यहाँ पे देखिए in terms of population strategy we have to first clear the census followed by the Census Board of India CBI for the different types of population strata. Fine. Followed by that we have to again clear about the livestock census 2019. Fine. इसके अलावा we have to taking care about the different types of banking transactions, banking regulations, और यह एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिए, all banking regulations could be near to our RRB or could be near to the development of rural area, और ये सबसे बड़े पॉसिबल किससे होगा, RRB रीजनल रूरल बैंक। फाइन। देन इंडियन इकोनॉमी, दिस इज द बुक बाय द रमेश सिंह, अगेन इसमें आपके बहुत से पर्पज सॉल्व होंगे। देन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बाय द मालविका सिंह, एंड अगेन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बाय एस सुब्बा रेड्डी एंड आर रघुराम। यहाँ पे जो आपका पंचायत राज जो पॉइंट है ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फाइन। देन फॉलोड बाय दैट
periodics and certain types of annual reports. अब ये देखिए सबसे पहले क्या है, you have to follow the NABARD की वेबसाइट, NABARD के annual reports, definitely you have to follow this. Then FCI related to the MSP, related to the CACP, you have to follow the FCI. Then MFPI, Ministry of Food Processing Industries, every year they publish their annual reports. NHB, National Horticulture Board, with concern to the agriculture statistics for the food grains and different types of fruits and vegetables. At the same time, here most important thing is what, 15th Finance Commission, which is just now going on. और इसका the committee is chaired by the Mr. N.K. Singh, 15th Finance Commission. ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए. It is started from 2021 till 2026. So जो ongoing चीज़ें हैं वो आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए. Like one of our crop insurance scheme, Prime Minister Fasal Bima Yojana, PMFBY, though it is started in 2016 but still it is running one. So जो ongoing चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी. Then Minister of Agriculture and Farmers Welfare, again यहाँ पे भी आपको बहुत से स्टैटिस्टिक मिल जाएंगे with concern to farmers utilization. एनुअल रिपोर्ट्स, यहाँ पे CACP का भी आपका पॉइंट कवर हो जाएगा. कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, फाइन. देन फॉलोड बाय द डिफरेंट स्कीम्स. Here the major emphasis on the poverty reduction schemes. Okay, so again finance commission की सबसे poverty, which is the definition of the poverty, what is the daily intake of the people if suppose they are in the poverty. So ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में होगी. Apart from that, government schemes, in which like the schemes which are already ongoing one, like Make in India campaign. Apart from that, Mega Food Park scheme, Cluster Development one, or even certain international organization like World Trade Organization, Asian Development Bank. So these are again important one for the examination point of view, fine. And in terms of agriculture and allied sector, or maybe agriculture engineering, our fisheries, forestries, you have to follow different types of publications or the books, maybe the Aryant, Kalyani, or the best source I could say the e-courses. E-courses is the online web portal which is available free of cost, and different types of agri apps could be there. So here the website of the e-courses, ecourses.icr.gov.in. Here you could find all number of books with a free click. Okay, so apart from that, you have to again cover rural economy, because here major emphasis on how NABARD could actually implement their different projects for the development of rural people. That's why rural economy is most important. Rural sectoral contribution, Panchayat Raj. I just say that in terms of agriculture economics, your Panchayat Raj. Again, Manarega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, NRLM, National Rural Livelihood Mission. That is again important, because here we have to make better livelihood of the rural people. And lastly, it is nothing but the providing urban amenities to the rural area, to the rural people. So that is most important. Okay. Apart from that, major schemes are there. Maybe some of the missions are there. Keep in mind here, when we are talking about the Pura, it is actually coined, or it is actually started by our Honorable President Mr. APJ Abdul Kalam in the year 2006. So these are again important. But okay, certain missions are there, they are again important. Now we are talking about the certain reference material. So this is the Pratyogata Darpan, the book Co-operation, Marketing and Finance, Indian Economy by Ramesh Singh, and the most important two sources to follow ESI, economic and social issues, and our agriculture and rural development. These are the Yojana and Kurukshetra. Okay. Now when we talk about the solution, important tips. So the first important tips for the NABARD grade A RDBS manager is qualifying paper versus merit section. Then though we know that there are 8 sections in our preliminary, out of which 5 are just we have to qualify. उनके marks आगे गिने नहीं जाएंगे. We are not able to count the marks for the next mains examination. But still we have to qualify it. ये सबसे बड़ी बात है. We have to qualify all 5 sections. Then here you have to solve the paper with very neatly manner, with very cautious manner. क्यों? क्योंकि negative is there. Negative 1/4 negative यहाँ पे. So अच्छे से ध्यान में रखिए. आपको ज़्यादा solve करने से अच्छा here your accuracy could be checked. आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी से चाहिए. मे बी 60-70% भी आपने सॉल्व किया फिर भी काम बन जाएगा, अगर आपकी एक्यूरेसी 80-90% है. इसलिए द मेजर फोकस इज ऑन योर एक्यूरेसी. नाउ मूविंग बैक टू द पॉइंट, हियर क्वालिफाइंग पेपर में आपको खाली क्वालिफाई होना है, देन फॉलोड बाय द मेरिट सेक्शन. सो यू हैव टू स्कोर इन 3 सेक्शंस, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड आवर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. यहाँ पे आपको स्कोर करना है. देन
ध्यान में रखिए प्रीलिम इज 200 मार्क्स विथ 120 मिनट्स. Definitely time constraint is there. In the 200 marks, 100 marks are for the merit sections and our 100 marks is for the qualifying sector. So आप आपके हिसाब से इसमें टाइम डिवाइड कर लीजिए, मे बी द 40-60 लाइक दिस वे. 120 मिनट्स में आप 40 मिनट्स स्टार्ट में दीजिए, 80 मिनट्स लास्ट में दीजिए, आप कैसे भी कर सकते हो. बट मेजर थिंग इज दैट यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई इन फर्स्ट वाइज सेक्शन. ध्यान में रखिए अगेन आपकी कट ऑफ भी क्वालिफाइंग की बहुत ज़्यादा होती है, ये भी बात नहीं. कट ऑफ भी बहुत कम होती है, बट स्टिल you have to qualify. That is most important thing. Fine. Then followed by major focus on the two sector. क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो आप नहीं हर कोई करेगा. So major focus is on economic and social issues and agriculture and rural development. यहाँ पे ध्यान में रखिए why major focus? Because the both sector is there already in our pre also in our mains. ये आपको दोनों जगह पे जनरल अवेयरनेस आपको खाली प्री में है, मेंस में इंग्लिश एंड द ES and ARD, ये दोनों चीज़ें. सो डेफिनेटली आवर फोकल पॉइंट कुड बी ES एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नाउ इंग्लिश विथ कॉमन सब्जेक्ट, डेफिनेटली हमें पता है इंग्लिश हमारे प्री में भी है और हमारे मेंस में भी है. प्री कुड बी आवर MCQ, बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ मेंस वी हैव टू we could say we have to write the answers maybe in the precise writing. So यहाँ पे आपकी इंग्लिश एज अ वोकल और एज अ वी कुड से कम्युनिकेटिव लैंग्वेज भी आपकी चेक होगी. सो आज से ही आप उस प्रति ट्राई कीजिए कि आपको कैसे अच्छे से बनानी है. मे बी विद द हेल्प ऑफ रीडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स, अप्लीकेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स. और मैं सबसे अच्छे कहूँगा कि आप नॉर्मल लेवल्स की बुक ले लीजिए, हाउ टू मेक वर्ड पावर ईजी. सो इट इज़ द वे टू एनालाइज द सेंटेंस, टू नो द प्रिसाइज राइटिंग, क्योंकि आपको यहाँ पे एनालिसिस बहुत अच्छे से हो जाएगा. फाइन. देन फोकस ऑन मेंस एंड स्टडी अकॉर्डिंगली. डेफिनेटली आप अभी से खाली प्री के हिसाब से मत पढ़िए, यू हैव टू फोकस फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको बाद में टाइम नहीं रहेगा. और दोनों के लिए मैक्सिमम सिलेबस इज सेम. जैसे हमें पता है इन टर्म्स ऑफ प्री आवर मेजर फोकस इज ऑन व्हाट, टू द मेरिट सेक्शन, एंड होल मेरिट सेक्शन इज ऑलरेडी विथ यू फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन. मेंस को आपको पूरा वही सिलेबस है मेरिट सेक्शन का, तो आपको वहीं से स्टार्ट कीजिए. फॉर दैट यू मस्ट रिक्वायर सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स. अब देखिए आप जो भी कुछ सुनते हो, जो भी कुछ पढ़ते हो, उसके आप सेल्फ नोट्स निकालो. क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इन एग्जामिनेशन फॉर द मेंस यू हैव टू राइट द एप्लीकेशन, or rather than that we could say you have to type the applications, type the different types of important answers for the questions. Again the questions is of more marks like 15 to 10 numbers. So यहाँ पे मैं कहूँगा prepare self notes that could be definitely useful to you to crack the different types of pre and mains examination of NABARD. That is one of the we could say proven factor. As अगर आपके पास खुद की नोट्स है, खुद के हैंडराइटिंग में लिखी हुई नोट्स है, सो डेफिनेटली आप वो अच्छे से एनालाइज कर पाते हो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, मुझे मेजर फोकस कहाँ पे देना है, मेरी कहाँ तक रिवीजन हो चुकी है और मुझे अब क्या पढ़ना है. सो दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट. सो डेफिनेटली प्रिपेयर सेल्फ नोट्स. ओके, सो दैट्स इट. Okay friends, जैसे कि हमें पता है today we covered all the things. These are definitely useful to you and imperative to you, in which we are talking about the total review of the advertisement. Apart from that, the reference material, and most importantly, what could be the strategy that could be followed in terms of to crack the pre and mains of the NABARD examination. So definitely these are useful to you. If you have any query, you could write me in the comment section. I will definitely help you out for the same. और जैसे कि मुझे बहुत लोगों का मैसेज आया है, सर स्टार्ट कर दीजिए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. सो विद इन 2 to 3 days आई विल डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम द आवर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. एक एक पॉइंट में कवर करूंगा दैट कुड बी डेफिनेटली यूजफुल टू यू to crack the NABARD pre-examination. So thank you for today's session. Stay tuned for the next.